हर 10 सेकंड में 10,000 मेट्रिक टन ग्लोबल वार्मिंग गैसेस ह्यूमन एक्टिविटी से प्रदूषण फैलाते हैं। जब तक आप हमारे इस एपिसोड को सुनेंगे, हमारी धरती ग्लोबल वार्मिंग की तरफ और बढ़ती चली जाएगी। Hello everyone, a very warm morning, afternoon or evening to you. I'm Swati Bathwal, public health expert, a climate change activist and a Fit India ambassador. और आज मैं आपसे कुछ खास बात कर रही हूँ और सुपर खास मेरी को-होस्ट देश की प्राइड मिस रिधिमा पांडे। रिधिमा के बारे में जितना मैं बोलूँ वो कम है, पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये स्पेशल एपिसोड डिजाइन किया गया है UNFPA इंडिया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के लिए, और हम बात करेंगे कि हाउ जेंडर इक्वालिटी, मतलब हम सब इक्वली साथ मिलकर कैसे एक सस्टेनेबल प्लैनेट बना सकते हैं, और हम डिस्कस करेंगे हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू इन्वॉल्व विमेन एंड यंग पीपल एंड हाउ दे कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन in adapting, mitigating and responding to climate change. And इसके लिए please meet my co-host Miss Ridhima Pandey. Ridhima, how are you? You have achieved remarkable things at such a young age. Please आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए. Hi Dr. Swati, it's really amazing to be on the podcast with you. और सो हाय एवरीवन, मेरा नाम रिधिमा पांडे है। मैं 14 ईयर्स की हूँ और मैं एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ। आई एम बेस्ड इन उत्तराखंड, इंडिया, एंड या आई हैव बीन एन क्लाइमेट एक्टिविस्ट सिंस 2013. आई हैव बीन mentioned in BBC's 100 most influential and empowering women's list, and I've been also working with UNICEF and Save the Children and a couple other organizations in terms of educating kids about what climate change is, what are their rights, and at the same time I've been working on creating awareness among the kids for them to know that, you know, this is how climate change is affecting them and this is why it is important for them to take action. Wow, इतने कम उम्र में रिधिमा आपने प्लैनेट के लिए कितना सोचा है और काम कर रही हैं। वाकई हम सभी लोगों को एक दूसरे को इंस्पायर करना चाहिए और क्लाइमेट चेंज की तरफ काम करना चाहिए। तो फिर चलिए, आज मैं रिधिमा से 3 क्वेश्चंस पूछूंगी और रिधिमा मुझसे 3 ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगी, so that we can learn from each other and share our experiences and thoughts on how we can build a sustainable and gender equal world. So now let me ask you some questions, Ridhima. रिधिमा, आप मुझे ये बताइए कि जो हमारी यूथ है जो घर पर बैठे हैं और या फिर स्कूल या कॉलेजेस में है या फिर गांव में या चलो बड़े शहर में ही है, वो क्लाइमेट चेंज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मतलब वो कैसे एक सिंपल वे में अपने क्लाइमेट की तरफ ध्यान दे सकते हैं या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? डॉक्टर स्वाति, मेरे हिसाब से द वेरी इजी वे टू स्टार्ट और टू बिगिन क्लाइमेट चेंज के तरफ अपना काम करना वुड बी टू टेक एक्शंस फ्रॉम अ वेरी स्मॉल लेवल। और मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप होगा टू एजुकेट योरसेल्फ कि आप कौन सी प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हैं, एंड देन टू टेक स्मॉल स्टेप्स और टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है। से फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन हमारी प्रॉब्लम है, सो व्हाट आर माई एक्शंस, आई मीन हाउ आर माई एक्शंस कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन एंड व्हाट कैन आई डू टू स्टॉप दैट। और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स और अपने पीयर्स को उस प्रॉब्लम के बारे में एजुकेट करना एंड टू बिल्ड अप अ नेटवर्क एंड स्टार्ट वर्किंग विद योर नेटवर्क फर्स्ट एंड देन यू नो टू एक्सपैंड एंड मेक इट मोर काइंड ऑफ लाइक यू नो फ्रॉम योर हाउस टू योर कॉलोनी थिंग, सिटी एंड देन कंट्री एंड देन यू नो टू मेक इट इंटरनेशनल थिंग। बट मेरे हिसाब से द बेस्ट काइंड ऑफ सोल्यूशन वुड बी टू फर्स्ट स्टार्ट स्मॉल एंड फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ ऑन द प्रॉब्लम। वाव, लवली रिधिमा, इसका मतलब इट्स ऑल बिगिंस फ्रॉम यू। चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ दूसरा सवाल। वो ये है कि रिधिमा, चिल्ड्रन एंड क्लाइमेट चेंज बोथ आर फोकस्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर, सो क्लाइमेट चेंज से स्पेशली लड़कियों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? I feel like climate change kind of like affects everyone, but it affects women or girls को ज़्यादा because I mean whether it's you know their like personal hygiene or health, at the same time you know when it comes to menstruation as well, you know अभी everyone doesn't have an access to you know a sustainable kind of products, so अभी people use products which are not safe for them, not safe for the environment, so it is kind of like a downgrade. And at the same time हम अगर देखेंगे तो villages में most of the houses or most of the livelihoods जो कि climate change से impacted है are mostly headed by women, because जो मेंस होते हैं घर के, दे आर वर्किंग समवेयर एल्स इन अ डिफरेंट सिटी और एट अ डिफरेंट प्लेस, सो जो सारा बर्डन है इट इज ऑन द वुमेन
and she has to, you know, अगर उनका waterways कहीं ना कहीं सूख गया है या उनका जो well है it doesn't have that much water, they had to travel, you know, for like many kilometers just so that they can fulfill the requirements such as giving water to their family and all these basic needs. So उसके लिए I feel like women's पे काफ़ी ज़्यादा pressure है, and at the same time climate change से लोगों का livelihood impact हो रहा है. So it kind of at the remote areas वो girls के education पे it impacts, और उनकी livelihood कहीं ना कहीं child marriage kind of also, you know, becomes a barrier, because once family doesn't have that financial goods and everything, you know, most of the times girls are married at an earlier age or they are not allowed to fulfill their education and stuff like that. So kind of like, you know, climate change is in a disregard when it comes to the women from my perspective, I guess. Wow. मतलब क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हमें इतना इम्पैक्ट कर सकता है रिधिमा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था. अब है मेरा आखिरी सवाल. आपने इंटरनेशनल लेवल पे इतना काम किया है रिधिमा, तो इंडिया में हमें क्लाइमेट चेंज की जागरूकता लाने के लिए हाउ कैन वी एम्पावर यंग पीपल टू टेक एक्शन, एंड व्हाट इज योर मैसेज टू यंग पीपल? डॉक्टर स्वाति, मेरे हिसाब से आई फील लाइक कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वेरी फर्स्ट थिंग वुड बी हमें हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है दैट नीड्स लॉट मैनी चेंजेस. आई मीन अभी क्लाइमेट चेंज पे वी डजंट रियली गेट दैट मैनी चैप्टर्स और आवर टीचर्स डजंट रियली टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज दैट मच हमारी क्लासेस में. सो आई फील लाइक हमारे एजुकेशन सिस्टम में देयर नीड्स टू बी मैनी amendments, or there needs to be बहुत सारे improvements needs to be done. And at the same time I feel like when it comes to a message to everyone that would be कि climate change हमें अभी as being kids ये हमें काफ़ी ज़्यादा impact करता है, because our bodies are still developing. तो हमारी immune system it's not very that great. So I mean right now whether it's air pollution or anything, you know, वो हमें ज़्यादा impact कर रहा है. हमारा जो childhood है it's kind of destroyed properly to say, you know, as compared to older generation का childhood. And at the same time in the coming years जब when we would be adults we would be the ones suffering, क्योंकि we have destroyed environment इतना ज़्यादा कि we won't be able to, you know, survive if we doesn't really take any changes right now, or if we doesn't really make that balance within, you know, our kind of needs and destruction at the same time. So I feel like mera message to everyone would be that start taking action, and you know you have to be the one start taking action for yourselves or sabke liye. And it is important because at the very end you would be the one, you know, suffering. So if agar aap suffer karna nahi chahte hain, so start taking action. लवली लवली रिधिमा, आपने इतने अच्छे जवाब दिए मेरे सारे क्वेश्चंस के. अब आपकी बारी है, आप मुझसे क्या पूछना चाहेंगी? Dr. Swati, as you are within the health sector, so I mean this is a question. What do you think about कि हमारी day to day activities कैसे environment जो हमारा surroundings है उसे कैसे impact कर रही है, हमारी activities कैसे climate change में contribute कर रही है, और क्या ऐसे actions है जो हम ले सकते हैं to minimize those effects? Let us begin from kitchen. पहले हम ये देखते हैं कि हमारी किचन में हम कितना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं. अब जब हम सब्जियों की दुकान में जाते हैं वी ब्रिंग प्लास्टिक इनटू आवर हाउस. सेकंड है दूध की बॉटल अगर हम देखते हैं या दूध की पैकेट्स देखते हैं वो भी कितने प्लास्टिक्स में कंज्यूम होता है. थर्ड वी लुकिंग एट इज पीपल व्हाट वी डू इज वी हैव गॉट एक्सेस टू कार. तो अगर हम जो चीज हम वॉक करके जा सकते हैं हम तुरंत कार में चले जाएंगे, व्हिच आल्सो इंक्रीजेस द एयर पोल्यूशन फॉर अस. सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे विच इज टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फूड, वेदर इट इज इन द डस्टबिन or whether it is in your kitchen, because we need to understand that our food is very very important. We need to reduce the लैंडफिल को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है. तो प्लीज अपने घर में सिंपल तरीके से डिकम्पोज करना शुरू करिए, कचरा कम फैलाइए. इन सारी चीजों से अगर हम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है थोड़े थोड़े स्टेप से भी हम बहुत चेंजेस ला सके इन अ कम्युनिटी. Amazing. I mean, I also feel like, ये kitchen waste we feel like it doesn't really contribute for many people, but it does. I mean, you explained it very well. So मेरा अगला सवाल होगा कि climate change again, you know, severely impacts like whether it's the mental health of the people, you know, those who are, you know, affected from the effects of climate change. हम ऐसा क्या कर सकते हैं to address these challenges and, you know, to cope up with these kind of problems within ourselves?
आई थिंक देखिए एक सेल्फ अवेयरनेस जैसे हमने बोला, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेंटल अवेयरनेस आल्सो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम खुद में करते हैं तो मेडिटेशन रियली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एंजाइटी एज वेल. चैंटिंग फॉर यंग किड्स, वी कैन गो बैक अगेन टू आवर बेसिक्स, go back to ancestral root where we can do some chanting, listen to some good music to reduce anxiety. But at this same time, when it is in a bigger frame, मतलब जब हम calamities की बात करते हैं, बहुत सारी women हैं जिनको access to basic necessities and hygiene कम हो जाता है, and they fear because there is a social stigma as well. वो open होकर अपनी problems को बताने में बहुत वो रहती हैं, guilt में रहती हैं, वो नहीं बताती हैं. I mean, music kind of plays a really great role when it comes to my anxiety. So I can totally relate to, all these things. So मेरा आखिरी सवाल would be again your expertise. How can you explain कि climate change कैसे हमारी body को अंदर ही अंदर, how it is impacting to someone who doesn't really know anything about this, who kind of like, plays dumb in these kind of areas. So how would you explain, to that person that how it is affecting you, and, how would you make them feel like it is impacting me like this and I have to take action? ओके, सो पहले मैंने जैसे रिधिमा आपको बताया कि ऑब्वियसली वेट गेन हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, ओबेसिटी, ऑल ऑफ दिस, एंड इट एड्स टू एंजाइटी एज वेल, योर मेंटल हेल्थ एज वेल, बिकॉज व्हाटएवर यू आर ईटिंग इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट. बट सबसे सिंपल है, अगर हम देखें तो आपने कभी भूख और प्यास को एक्सपीरियंस किया है? वो कितना खराब फीलिंग होती है जब आपके पेट में आपको भूख लग रही होती है और जब प्यास लगती है तो आपके पास पानी ना हो. So research में ये देखा गया है, if climate change continues like this, even if the temperature rises by 2 more degrees, it will impact the availability of food. Our food system is going to collapse. So we won't have access to food. We will not have access to safe drinking water as well at one point. So what we are going to do now, it's going to make an impact in the future as well. And most importantly, हमने देखा है how important it is for us to breathe. अगर हम सांस नहीं लेंगे, so can we live? We can't even live for more than 1 minute if we don't breathe. Now imagine breathing a polluted air. You can't breathe polluted air for more than a minute. The lungs will have to work really hard to get rid of those toxins. So this is what the climate change is going to do, and the action needs to be taken now, because we can't wait for next 50 years that when we don't have food available, we are working on it. So it's basically for the future we are doing this. And exactly, and even the latest report we have from the IPCC tells us about how, it is going to affect, how it is going to affect our, whether it's food production or whether it's, people who won't be able to access to food, or, all these things, and how it is going to impact the poorer communities. So I feel like change really needs to come, and I mean, I guess people would be really amazed to, listen to how it is impacting them, and I really feel like they would start taking actions after listening to you. Oh, definitely. Thanks, रिधिमा. मैं लोगों को फिर से बोलना चाहूंगी कि जरा सोचिए, अगर हमारी धरती 2 डिग्री टेम्परेचर से भी अगर ज्यादा बढ़ गई तो फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन, साइक्लोन्स और गर्मी के साथ साथ हमें खाना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा. It will cause more disparity in gender and women's right. Climate action is a joint effort. इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है. For more updates, UNFPA के social media handles को follow करिए, and it was lovely talking to you. Bye bye.